बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? ठीक ठाक इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप घर में? मुझे उम्मीद है कि आप सारे लेसन्स, जो स्टूडेंट्स तो बाकायदगी से लेसन देख रहे हैं ना, उनकी तो काफ़ी हद तक इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट और बहुत सारी मिस्टेक्स जो हैं वो सॉल्व हो गई होंगी, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स उनकी ख़त्म हो गई होंगी। तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ। सबसे पहले मैं उन सब का थैंक्स करना चाहूँगी जो सब मेरे YouTube चैनल को, मेरी वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे हैं। तो टुडे आवर टॉपिक इज़ यूजेस ऑफ वुड, कि इंग्लिश ग्रामर में वुड कहाँ, कैसे, क्यों और किस जगह इस्तेमाल होता है, किन सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। ग्रामर में वुड का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा अहम है और इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन है कि ये कहाँ इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, ताकि आपको पता चले कि हमने वुड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है। द सब्जेक्ट ऑफ मॉडल वर्ब is important when you learn English and should be given sufficient attention since these verbs are frequently used in English and are a central part of English grammar. Word is English modal verb, and in order to be sure you are using properly, it's important to understand when to use would. So I invite you to consider some of the guidelines regarding would in English. So please look at the board. Would is an auxiliary verb, a modal auxiliary verb. We use would mainly to, number 1, talk about the past. Number 2, talk about the future in the past. Number 3, express the conditional modal. Number 4, expressing desire. Number 5, polite request and questions. Number 6, opinion or hope. And number 7, wish and regret. Now here is a structured sentence using would, that is, the basic structure for would is, first of all we use subject, then we use auxiliary verb would, and after this we use main verb. This is the sentence structure when we use would in a sentence. Now here are some examples of uses of would. Uses of would with examples. Would for the past. We often use would as a kind of past tense of will or going to. The example is, I thought it would rain, so I brought my umbrella. Using would as a kind of past tense of will or going to is common in reported speech. For example, she said that she would buy some eggs. The candidate said that he wouldn't increase taxes. Now would for conditionals. We often use would to express the so-called second and third conditionals. The examples of would while using conditional sentences. The number 1 is, if he lost his job, he would have no money. Number 2, if I had won the lottery, I would have bought a car. Now use would when giving advice. Use would when we giving advice. The examples are, if you asked me, I would say you should go. I wouldn't eat that if I were you. Now would, use of would for desire or inclination. The example number 1 is that, would you like some coffee? Example number 2, I would like to go to the movies later.
Now, use of would for polite and request and questions. The example number 1 is, would you open the door? Would you go with me? Would you know the answer? Now, would for opinion or hope. For example, I would expect him to come. Example number 2, I would have to agree. Example number 3, I would imagine that you will come. Next, use of would for wish. I wish you would stay. We wish that he would go. Would. Past tense of will expresses something happening in the past or in an imaginary situation. Would doesn't leave any question or possibility. For example, I would help you this Sunday, but I am working. Use of word for offers and invitations. I would like to invite you to our wedding. And example number 2 is that, would you like to have tea? मैंने आपको हेडिंग वाइज बताया है कि वुड डिज़ायर के सेंटेंसेस में, कंडीशनल सेंटेंसेस में और एक्सप्रेशंस के सेंटेंसेस में, पास्ट के सेंटेंसेस में, पास्ट से रिलेटेड फ्यूचर के सेंटेंसेस में, इन सब में कहाँ कहाँ हेडिंग वाइज मैंने आपको बताया है वुड कैसे कैसे और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। उसका सेंट फॉर्मेट भी आपको बता दिया है कि वुड सेंटेंस में किस जगह उसकी पोजीशन क्या होगी, और मैंने आपको ईच पॉइंट के साथ उसकी एग्जांपल्स भी दी हैं। डिज़ायर की एग्जांपल्स भी, कंडीशनर की एग्जांपल्स भी, पास्ट की भी एग्जांपल्स भी, ओपिनियन की भी और क्वेश्चंस की भी, रिक्वेस्ट की भी, क्योंकि ये सारे वो टॉपिक्स थे जहाँ पे मैंने आपको बताया कि वुड यूज़ होता है, और उससे मैंने एग्जांपल्स भी आपको साथ ही दी हैं ताकि आपको अच्छी तरह उस एग्जांपल से वाज़ेह और क्लियर हो जाए कि हमारा वुड यूज़ कहाँ कहाँ होता है। सो आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और अगर कुछ आपसे स्किप हो गया है या एक दफ़ा पढ़ने में, एक दफ़ा सुनने में आपको समझ नहीं आया, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दोबारा देखें, और 1 से 2 दफ़ा देखेंगे तो जो चीज़ें एक दफ़ा स्किप हो जाती हैं, समझ में नहीं आती, वो सेकंड टाइम सुनने से, थर्ड टाइम सुनने और देखने से जहन में बैठ जाती हैं। ये मैं आपको एक फार्मूला बता रही हूँ लर्निंग का, क्योंकि जब एक दफ़ा हम चीज़ पढ़ते, सुनते, देखते में समझ नहीं आती, कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, कुछ चीज़ें बैठ जाती हैं, तो फिर हम उसको रिपीट में दोबारा सुनते और देखते हैं, तो वो जो पहले हमसे मिस हो चुकी होती हैं ना, वो दोबारा हमारे जहन में आ जाती हैं और वो फिर पक्की जहन नशीन हो जाती हैं। ये मैंने आपको एक टिप दी है, जो भी आप लेसन कभी भी ज़िंदगी में याद करने बैठें, ये नहीं कि सिर्फ ये जो भी लेसन याद करने बैठें, आप उसको 2 से 3 दफ़ा देखें, 2 से 3 दफ़ा उसको रीड आउट करें, 2 से 3 दफ़ा उस पर कॉन्सनट्रेट करें, तो वो चीज़ें खुद ब खुद आपके जहन में आ जाएंगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके साथ हाज़िर होंगी। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हुआ करे कि आपको मेरे चैनल से कुछ समझ आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।